ओके, कंप्यूटर का ये चैप्टर है, चैप्टर 6, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल 2010। योर एम, हमारा लक्ष्य क्या है? टू लर्न अबाउट फीचर ऑफ MS एक्सेल 2010। हमें MS एक्सेल के 2010 के फीचर्स देखते हैं। स्टार्टिंग MS एक्सेल 2010, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल 2010, डाटा टाइप्स, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, एंटरिंग डाटा इन द वर्कशीट, शेविंग अ वर्कबुक। ओके, MS Excel is an application software that helps you to store and analyze data. It organizes data in the form of row and columns. You can create a chart and graphs from the data and convey more meaningful information. MS Excel is of a great importance to those who maintain accounts for sales, bills, or do mathematical calculation, as it is used to create electronic spreadsheet using the data. Feature of MS Excel 2010. Feature of MS Excel 2010. Function and formulas. Function are the built-in formulas used for calculating percentage, interest, average. It's in MS Excel, formulas are mainly used for performing simple as well as complex calculations. Formatting features improves the appearance of data. Auto calculation, the data is automatically rectangulated in the whole worksheet if any change is made in a single cell. Fast searching and insert replacing of data. Entering data in a series using autofill option. Data can be viewed in a graphical forms as charts. The charts help to understand, analyze, and compare data in an effective manner. These advanced features have made MS Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy accounting and financial tasks and intermediate decisions. Okay, starting MS Excel 2010. To open MS Excel 2010, फॉलो दिस स्टेप्स। आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2 है क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम। स्टेप 3 क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टेप 4 क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। An empty workbook titled Book 1 is displayed on the screen similar to this. Look at here, titles bar यहाँ पे दिया गया है, all programs। वहाँ पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके आप क्लिक कर सकते हो एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। लुक एट हियर, ये रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। एंड देन वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। सो इस तरीके की कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगी। क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, फाइल टैब, नेम बॉक्स, हाईलाइटेड हेडिंग्स, वर्कशीट विंडोज, रो हेडिंग्स। ओके, इस तरीके से रो हेडिंग्स होती है। वर्कशीट टैब, स्क्रॉलिंग बटन्स। स्क्रॉलिंग बटन्स मीन्स आगे पीछे घुमाने वाला। स्टेटस बार, कॉम्पैक्ट्स ऑफ MS एक्सेल 2010 एंड कॉलम हेडिंग, माउस पॉइंटर्स, रिबॉन, फाइंड सिलेक्ट, ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला बार। लुक एट हियर, ये है फॉर्मूला बार। आपको यहाँ पे फॉर्मूला आप दे सकते हो, जैसे A1 जो भी फॉर्मूला हो आपको परसेंटेज की या फिर प्लस जो भी आपको निकालना हो उसके यहाँ पे फॉर्मूला देके इस तरीके से कर सकते हैं। File tab, a green button located at the left top corner that contains the file menu commands such as a new option, save. It's a quick access toolbar. It's present on the title bar. It displays quick access buttons of the save, undo, and redo commands. Ribbon, this bar has a tabs with groups of related commands display on it. Formula bar, it is used to enter and edit formulas and perform calculation on your worksheet data. It is also used for entering and editing the all contains. Name box, the address of the active cells is displayed in this box. Worksheet windows, it is in single page in the Excel, also called it spreadsheet. Worksheet tab,
There can be more than one worksheet in Excel and each has a specific name. Any worksheet can be activated by clicking on the worksheet tab. Worksheet tab scrolling buttons. These are arranged on the left side of the horizontal scroll bar. These are used to display the worksheet tab, which are invisible. The tab is clicked to make a worksheet active. Status bar. The horizontal bar at the bottom show various information about the field in which you are working. The right section of the status bar has the view control buttons for the spreadsheet row. The horizontal divisions on a worksheet are called row. This is a 10,048 576 rows in an Excel worksheet. Column. The vertical divisions on a worksheet are called columns. There are 384 columns in Excel worksheet. Next, row and column heading buttons. The row and referred using numbers and columns using the letters. The row headings range from 1 to 10,048 567 and column headings range are A to XFD cell. The instructions of a row and column is called a cell. A cell is an Excel worksheet, looks like a rectangular box. Active cell. The currently selected cells that uppers highlighted with the dark black borders is an active shell. That is, the data is entered in active shells. Mouse pointer. The mouse pointer is a display as a blocks plus sign whenever it is located in a cell on the worksheet. Another common shape of the mouse pointer is the blocks arrow. Workbook. A workbook is a collection of different worksheets. By default, a workbook contains 3 worksheets that can be increased as a per requirement. Cell range. It is a collection of 2 or more cells. Cell range is 2 types. Okay, continuous cells range and non-continuous cells range. Continuous cells range is a collection of a cell which are adjacent or next to or one another column is used for specifying this cell range. E.g. A1 to A6. Non-continuous cell range is collection of cells which are not adjacent to one another, comma is used for specifying this range. E.g. A1 B1 C3. Okay. Block. A group of cell when selected from the rectangle which is called block. Okay. Next, data type. So while working in Excel, following following type of the data can be entered. Numbers included the digit 09 and their various combinations. All types of calculation can be done on numbers. Text included the collection of letters, numbers and special characters. So no mathematical calculation can be performed on text. Date and time. Date type is used to enter data in different formats, but the difficult formats is MMDDY. Month, day, years. MMDDY का मतलब होता है month, day, years, time. Time type is used to enter time in the others HHMMSS format. HH का मतलब होता है hours and MM का मतलब होता है minutes and SS का मतलब होता है seconds format. ओके, इस तरीके से आप फिलअप डाटा टाइप कर सकते हो. नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. So to create a new workbook in MS Excel 2010, follow these steps. Step 1, click on the File tab to open backstage views. Step 2, click on the new options. Step 3, click on the blank workbook in the available temples list. Step 4, click on the Create button. The new workbook will open. Entering data in the worksheet. The data in the form of a number or a text can be entered by just clicking on a cell and typing with the help of a keyboard. You can type data directly into the cell or you can enter data using the formula bar. Step first, click on the cell where you want to enter the data and start typing. Look at here, ये दिया गया है इस तरीके से. सेल ये हैं, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो जो भी आपकी
इंफॉर्मेशन है। ओके, टू मूव step 2 to move down one cell, press the enter key. Step 3, repeat step 1 and step 2 till you finish entering all your data. Look at here, यहाँ पे पूरा दिया गया है। बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये रहा जनवरी फरवरी मार्च का हमने डाटा इसमें एंटर किया है। एंड ओके, look at here's pen drive, mouse, monitor and keyboards. ओके, बुक 1 में एंड फाइल सेव की गई है। ओके, लुक एट हियर, गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Saving a workbook, when you want to save a documents you have two options, save और save as options। आपके documents में आपको दो options मिलेंगे, save and save as। To save a documents, click on the file button and click save option। You may need to use the save as a features when you need to save a copy of a workbook under a different name। To save a workbook, follow these steps। Step 1, click on the file button to select save options। फाइल बटन में जाके आप सिलेक्ट सेव ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए। सेव एज अ डायलॉग बॉक्स ओपन्स, उसमें ही आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंड स्टेप 2, टाइप द नेम ऑफ द वर्कबुक इन द फाइल नेम। जो भी आपको फाइल सेव करनी हो उस नाम से आप फाइल सेव कर सकते हो। स्टेप 3, select the locations of the workbook in a save in a box। Step 4, click on the save button to save the documents। ये रहा यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये रहा फाइल नेम, सेव एज एक्चुअल वर्कबुक। इस तरीके से आपको फाइल सेव करनी है। एंड टू use save as a feature, follow these steps। Step 1, click on the button to select save as options, the save as dialog box option। Step 2, follow step 2 to 4 for a saving workbook।